Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today we have our last complex in your inorganic 3D metals chemistry, and that complex is potassium hexacyanoferrate. Okay? So first of all, we'll begin with our preparation. Preparation के लिए हमारे पास हम दो मेथड पढ़ेंगे. There are many methods, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे only two methods. One method which is used for its preparation on the small scale, और दूसरा method we can manufacture this on the larger scale, means industrial scale. तो small scale पे हम इसको कैसे prepare कर सकते हैं? By mixing a solution of ferrous sulfate with potassium cyanide. So ये आपका ferrous sulfate है, it reacts with potassium cyanide. It first forms FeCN(2), and then this FeCN(2) it further reacts with KCN to form potassium hexacyanoferrate. So this is the small scale preparation. लेकिन जब हम larger scale की बात करेंगे, it's prepared from the coal gas. Coal gas contains 0.2% impurity of hydrogen cyanide. This is your hydrogen cyanide. So जो coal gas में hydrogen cyanide है, that reacts with potassium hydroxide to form potassium cyanide, and that potassium cyanide it reacts with ferrous sulfate to form potassium hexacyanoferrate. So this is your industrial scale. So on the larger scale, it's prepared from the coal gas, which contains 0.2% impurity of hydrogen cyanide, and that coal gas is allowed to pass through a washer which contains ferrous sulfate and potassium hydroxide to yield potassium ferrocyanide or potassium hexacyanoferrate. So ये दो methods हो गए for small scale and larger scale. There are many other methods, लेकिन for your examination purpose, this is more than enough. At least we should remember these reactions. Now let's move to the chemical property. It has many chemical properties, लेकिन some important properties which we can remember and which are useful for examination. One of the properties is reducing property. ये important है. इसको याद रखना है कि it acts as a reducing agent. When it's a reducing agent, हम ये कह सकते हैं that it can get oxidized by chlorine, ozone, peroxide and acidified potassium KMnO4. ठीक है? For example, this ये जो आपका potassium hexacyanoferrate है, so it can get oxidized by Cl to form this complex, and then it can get oxidized by this ozone in water to form same complex, and then potassium hexacyanoferrate can get oxidized by hydrogen peroxide to form the same complex. इन तीनों में oxidation state of iron is +3, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे it is +2. And then you can also use the acidified KMnO4. मैंने वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई क्योंकि it was a bit lengthy. तो इतना आप रिमेंबर कर सकते हैं, बड़ा आसान है. इस कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे K4 था, you write down K3 in shortcut. ठीक है? Now action of metallic salts. For example, I have metallic salt zinc sulfate. You react with this metallic salt with this potassium hexacyanoferrate. आपको क्या करना है? इस K4 को रिप्लेस करना है बाय Zn2, क्योंकि Zn2 में 2+ चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेशियम इट्स अ यूनिवैलेंट, इट्स अ सिंगल प्लस चार्ज, तो यहाँ पे K4 लिखेंगे तो जिंक आप लिखेंगे Zn2. लाइकली व्हेन यू रिएक्ट दिस विद कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में भी +2 चार्ज है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे एज Cu2. एंड देन इफ यू रिएक्ट दिस विद फेरिक सल्फेट, ये जो K4 है, दिस K4 विल बी रिप्लेस्ड बाय Fe4. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आपको लिखना है यहाँ पे 3 थ्राइस. ये जो कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट विद फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, इट गिव्स अस एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्रूशियन ब्लू. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे खूबसूरत कलर होता है इसका. एंड दिस इज द पिक्चर आई हैव केप्ट इट. दिस इज प्रूशियन ब्लू कलर. तो प्रूशियन ब्लू की हमें फॉर्मूला याद रखनी है. इट्स कॉल्ड फेरिक फेरोसाइनाइड. सो इट्स Fe4 FeCN(6) होल थ्राइस. यानी इस कॉम्प्लेक्स को हमें K4 को रिप्लेस करना है पे Fe4 एंड होल थ्राइस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको रिमेंबर करना बड़ा इजी है. तो these are some of the chemical properties which at least we should remember for our exam purpose. Now talking about its uses and structure, it is used for the qualitative analysis of iron, copper and zinc ions. It is used for making blueprints, जैसे हमने अभी इसको बनाया. It is used for making a pigment, Prussian blue, and preparation of pure carbon monoxide and manufacture of potassium ferric cyanide. ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी यूजेस है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्ट्रक्चर. सबसे इंपॉर्टेंट एज पर द वैलेंस बॉन्ड थियरी, इट्स हाइब्रिडाइजेशन is D2sp3
अब यहाँ पे D2 पहले आ गया, सो इट्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज यूजुअल, ठीक है। इस पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स का निकालेंगे तो इट्स +2, सो आयरन इज प्रेजेंट इन द +2 स्टेट। ज्योमेट्री 6 लिगैंड, सो इट्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। एंड दूसरा जब आप इसके d ऑर्बिटल्स में देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्वियसली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट एज पर द वैलेंस बॉन्ड थियरी दिस इज जो कॉम्प्लेक्स है इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, iron is present in +2 oxidation state, octahedral is the geometry, there is no unpaired electron, so it is diamagnetic in the d orbital, there is no unpaired electron, and then it is inner orbital and low spin complex. Why inner orbital? Because it's 3d, 3d orbitals are involved in the hybridization. So this is all for the this complex, that is potassium hexacyanoferrate. तो आपके पास नोट भी होगा, you can download it for exam purpose, and this is enough information as far as the competitive exams are concerned. So I feel this is all regarding the 3D metals. The next we'll start another chapter regarding the organometallic portion of this inorganic chemistry. So thank you.